So this was a ticking time bomb, which has now exploded with the Bannu CTD fiasco that played out for 72 hours right in front of our eyes. And it's in a way it's a rude wake-up call as well. What we are witnessing now is a cumulative effect of that policy, which in the form of blowback is resulting in increasing number of terrorist attacks in Pakistan's northwestern periphery, and there have been attacks in southwestern areas as well. KP, maybe there are not, prisons, separately built prisons to keep militant inmates, and investigation facilities where they can be investigated in a safe environment. So you have this CTD facility in a rented house in the middle of a residential area, and you have one compound where there are, I think, 35 30 to 35 inmates are there, and you have about 4 to 5 officials, CTD officials, which are keeping them there and investigating them. And it was so easy for those 30 to 35 people to overpower these 5 people, and the protocols were not being followed. So the locality of that facility is very awkward. B, it was overcrowded. It did not have those adequate facilities where the life of CTD officials should have been out of danger. They tried their best to save their lives, and they tried to talk the militants who overpowered the CTD officials, killed, I think, 1 or 2 of them, and then there was a hostage situation that evolved. So they tried to talk them out of their demands. What were the demands? Initially, they said they want a safe passage and an airdrop to Afghanistan, and later they changed it to they should be given a safe passage, I think, to North or South Waziristan. These demands were rejected, and they were asked to surrender and go back to their barracks. Once the negotiations failed, which continued for about 48 hours, that is when they started the clearance operation. So I think to avoid casualties and to avoid any violence, they gave it enough time, which was 48 hours. And once the negotiations broke down, I think that is when the clearance operation was ordered. And of course, while you are negotiating in such built-up environments, and this CTD was located in the heart of Bannu Kent and in the middle of a civil area, civil residential area. So you have to know the whereabouts, the structure of the building, where the militants are located, how are you going to enter, and what can you do to avoid, maximum efforts are geared towards avoiding the casualty. So I think, bringing all these elements together, that is what caused the delay. Pakistan had 2 ceasefires with TTP. One was in November last year, which the TTP called off in December unilaterally, and it started with its attacks against the Pakistani security forces. And secret negotiations started again in March, resulting in another ceasefire in June, and then a formal peace process started. And that process continued until the end of July, when Al-Qaeda's chief Ayman al-Zawahiri was killed in a US drone attack in Kabul. Subsequently, we also heard the news that TTP's prominent commander Umar Khalid Khurasani was also killed in Afghanistan under mysterious circumstances. But TTP quoted that as a reason of calling off the June ceasefire again in November.
the day when current previous Army Chief General Bajwa was retiring and current Army Chief General Asim Munir took over, that same very day, they announced that they are, calling off the ceasefire, and they urged their fighters across Pakistan to resume their attacks. And the first attack that we witnessed was a suicide attack in Quetta on a police team which was guarding the polio vaccination team. It started there, and then since then we have seen a series of attacks. There have been a couple of suicide attacks in North Waziristan, Miran Shah and other areas. We also saw the Bannu CTD attack, where the hostages took over and they tried to negotiate their release, but it ended up in an operation where I think most of them were killed and some surrendered, others were arrested. Adjacently, the TTP militants, I think, attacked another police station in South Waziristan, where they overpowered the people in the police station. They took their weapons and then escaped from there. So this is a wave of attacks which has taken place since the ceasefire has been called off. And in these attacks, what we see is the level of tactical sophistication which was on display even earlier this year. And now they are showing that capability again. And we can clearly see that the organizational strength and operational strength which TTP has gained as a result of peace talks, because they were conducted from a position of weakness, and we are seeing the blowback, number one, of these ill-conceived peace talks, which were, as I said, done from a position of weakness. Number two, the return of the Taliban in Afghanistan. Their revival had a rejuvenating impact on TTP. टीटीपी की डिमांड्स क्या थी, जहां पे ये चीज आके डेडलॉक हुई? टीटीपी की डिमांड्स क्या थी कि एक तो एक्सपाटा रीजन का जो मर्जर है केपी से, उसको रिवर्स किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, वो ये कह रहे थे कि उनको ऑटोनॉमी और शरिया चाहिए होगी इन दी एक्सपाटा रीजन। नंबर तीन, वो वेपन्स को जो है वो ले डाउन करने पे तैयार नहीं थे। नंबर फोर, उन्होंने कहा था कि वो एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ही कंटिन्यू करेंगे। नंबर फाइव, वो ब्लैंकेट एमनेस्टी, सारे प्रिजनर्स की रिलीज और उनके लिए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मांग रहे थे। ये टीटीपी की डिमांड्स थी। उससे पहले उन्होंने कुछ प्री कंडीशंस भी रखी थी कि तकरीबन उनके 100 जो प्रिजनर्स हैं उसको एज अ सीबीएम और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उनको रिहा किया जाए। और उसमें दो हाई प्रोफाइल मिलिटेंट थे, एक मुस्लिम खान थे और एक जाहिद खान, इफ आई एम करेक्ट, मैं ये नाम शायद भूल रहा हूँ। उनको भी उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन की जरूरत थी, वो उनको मूव कर दिया गया था, लेकिन कभी उनको टीटीपी या अफगान तालिबान के हवाले नहीं किया गया। लेकिन वो भी मानने पे रियासत तैयार हो गई थी। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो पाकिस्तानी रियासत टीटीपी से डिमांड कर रही थी, या जो पाकिस्तानी रियासत की रेड लाइंस थी, उसमें एक तो ये था कि एक्सपाटा का मर्जर इज अ रेड लाइन, ये रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, तो उसको रिवर्स करने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, लेकिन वो उन्होंने उस तरफ गए नहीं। नंबर टू, वो टीटीपी को कह रहे थे कि अगर एक डील हो जाती है जिसके नतीजे में उनकी फिर रिपैट्रिएशन बैक टू देयर एरियाज होगी, तो दैट विल बी अंडर द पाकिस्तानी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एनीथिंग व्हिच इज above the constitution or against the constitution or outside the constitutional framework, वो पाकिस्तान की रियासत ऐसा कोई मुतालबा टीटीपी का नहीं मानेगी। तो they expected TTP के अगर provided there is an agreement and a settlement and relocation of TTP from Afghanistan back to their areas, so they will live like normal citizens, respecting and abided by the constitution. और फिर पाकिस्तानी रियासत ने उनको ये भी कहा कि वो एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसबैंड करें
अपना नाम तब्दील करें फ्रॉम तहरीके तालिबान पाकिस्तान टू एनी अदर नेम एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। कुछ नाम मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 नाम शायद सजेस्ट भी किए गए थे, लेकिन टीटीपी ने इनसे इनकार कर दिया। तो फिर ये डेडलॉक कंटिन्यू किया एंड इवेंचुअली फिर वो कोलैप्स कर गया। और इसके अंदर आई थिंक जो फैक्शन टीटीपी के अंदर आई थिंक ज्यादा हार्ड लाइनर थे, मैं उनको ये तो नहीं कहूंगा कि दे वर अपोजिंग द पीस टॉक्स, लेकिन जिनकी रिजर्वेशंस थी, या जो ये कह रहे थे कि हमने क्यों एक यूनिलैटरल इनडेफिनेट सीज फायर पाकिस्तानी रियासत को दे दिया। उसके अंदर वो उमर खालिद खुरासानी का ग्रुप था, जो एक हार्ड लाइनर समझा जाता है और जिसने माजी में भी जब भी पीस टॉक्स हुई तो उनकी मुखालफत की थी, एंड इवेंचुअली ही वाज किल्ड एज वेल। अब टीटीपी ने तो ये ब्लेम पाकिस्तानी रियासत पे किया, लेकिन जो एक्सपर्ट कम्युनिटी के अंदर ओपिनियन पाया जाता है, वो लोग जो इन ग्रुप्स को क्लोजली इनकी इंटरनल डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हैं, उनका मेजॉरिटी का व्यू यही है कि ये टीटीपी के अंदर की लड़ाई थी। जब नवंबर का सीज फायर लास्ट ईयर का कोलैप्स किया दिसंबर में, जो टीटीपी ने यूनिलैटरली कॉल ऑफ किया, तो जो वेव ऑफ अटैक आई थी वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। And we in a month took more than 80 casualties, mostly of the security forces stationed at the border. And then we went into negotiations के tactical ceasefire करके फिलहाल इस violence को रोके, and then we'll see what we can do. TTP on the other hand, because they are safe in Afghanistan under the protection umbrella of the Taliban regime, and because of the Taliban's revival, they feel rejuvenated and emboldened, and they have that triumphant narrative going in their favor. So they showed maximum rigidity and they never budged from their demands. यानी जिरगास भेजे गए from the ex-Fatah region, from the Malakan division, उलेमा भेजे गए, politicians थे, फिर security का अलहदा से 3 लेवल पे ये डायलॉग चला, but at no point TTP was ready to show any flexibility. While on the other hand, we were bending over backwards to get some form of concession from TTP, other than the fact कि उन्होंने जून में हमें indefinite ceasefire दिया, उसके अलावा कोई concession TTP ने नहीं दिया। और इवन के जो जून का ceasefire था, वो भी उन्होंने आगे आके जुलाई अगस्त में उन्होंने अटैक्स रिज्यूम कर दिए। उन्हें क्लेम नहीं किया या ये कहा कि ये हम रिटेलिएटरी अटैक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पे फोर्सेस का ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है, विच इन देयर एस्टिमेशन वाज अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर। तो वो डिफेंसिव या रिटेलिएटरी अटैक कर रहे हैं। तो वो जून का सीज फायर एक्चुअली तो प्रैक्टिकली अगले महीने या 1.5 महीने के बाद ही कोलैप्स कर गया था, बट फॉर्मली वो अभी couple of weeks ago in October or November में जाकर उसने collapse किया है। As far as the relations with Afghan Taliban or TTA or Afghanistan is concerned, तो वो तो already they are at all-time low. We have seen border flare-ups, we have seen border closures, we have seen unprovoked firing from Afghanistan. 1 or 2 times in retaliation earlier this year, Pakistan ने within the Afghan areas जो है वो air strikes भी की थी in retaliation, and time and again Pakistan has asked Afghan Taliban के वो TTP के attacks रोके, but the dilemma here is के Afghan Taliban TTP के अफगानिस्तान में वजूद से ही officially इनकारी है। They haven't officially admitted कि TTP वहाँ है। That's the level of challenge that you are facing. तो of course यहाँ पे जैसे जैसे ऑपरेशन अगर अब एक लॉन्च होता है, जो मेरा ख्याल है होगा, और यहाँ से जब एक पुश आएगी तो ये अफगानिस्तान की तरफ ये मिलिटेंट भागेंगे और उधर से प्रेशर डिप्लोमेटिक आएगा, तो रिलेशनशिप तो खराब होगा। और इस रिलेशनशिप के खराब होने की एक डायमेंशन अब अमेरिका पाकिस्तान का बढ़ता हुआ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है,
जो रेजिडुअल थ्रेट ऑफ ट्रांसनेशनल टेररिज्म है इन अफगानिस्तान, उसके ऊपर पिवट कर रहा है। तो जैसे जैसे अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, उसी एडजेसेंटली विल सी के जो पाक अफगान ताल्लुकात है, ये जो अफगान तालिबान पाकिस्तान ताल्लुकात है, उसमें अबतरी आएगी। रियासत अपनी क्रेडिबिलिटी मनवाती है गवर्न करके, जिसमें बेसिक जो चीजें हैं वो जस्टिस की बात है, वो सिक्योरिटी की बात है, वो एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की बात है। तो जब तक गवर्नेंस का डेफिसिट रहेगा, तो नो अमाउंट ऑफ लिप सर्विस कैन resurrect the broken or dysfunctional relationship between the citizenry and state or the leadership.